शुरू करें दोस्तों. Thank you for coming because you've had 2 exposures today here. This will take some time because I'll do as usual English and Hindi, both languages, and we'll have question answer if any after that. Friends, this is a terrible, tragic and treacherous development. It's quite astonishing how the Law Commission has recommended not only the retention of 124A, but making it harsher, more ferocious. As I said, it would be comic were it not tragic for the nation. The BJP, through its instrumentalities and agencies, is clearly using or intending to use sedition as a tool for subversing, subjugating and silencing dissent. Friends, let me give you the 5 or 6 elements in a nutshell, and you will get it in a note in para 10A where I've summarized the whole thing. And this is a little important for you to understand and appreciate, and you means through you the nation. In a nutshell, friends, the Law Commission proposal, number 1, makes the existing law of sedition far more draconian and invasive, far more prejudicial by enhancing the lower end of the punishment from 3 to 7 years. Second, it clearly ignores the letter and, more importantly, the spirit of the Supreme Court proceedings of May and October last year, 2022, which specifically rendered the entire offence of sedition stillborn, clearly intended it to be inoperative pending its repeal or significant softening. It is astonishing how directly it is against the Supreme Court spirit. Third, the proposal purports to legislate or convert into legislation what has always been part of our judge-made law for 60 years. Kedarnath is 60 years ago, in 1962. Namely, खोदा पहाड़ निकला चूहा 60 साल बाद जो कानून में लिखा था, उसको आप प्रस्तावित कर रहे हैं कि आज उसको विधायिका का कानून बना दे. उस वक्त लिखा गया था एक निर्णय वाले कानून में. उसी चीज को आप सिर्फ ये बोल रहे हैं कि विधायिका का कानून बना दें. Fourth, it has provided no additional safeguard, caveat, any limitation to prevent the abuse. And I'll give you some startling figures of abuse. Fifthly, it has sent a clear signal as to the colonial mindset of this government. A colonial mindset coupled with a signal sent to the nation that we intend to retain this draconian provision as a threat to you, as a threat upon you, as a threat against freedom of speech, expression, thought and action, which is the essence of democracy. And lastly, this government has obliquely declared its intent to continue to be selective and partisan in the misuse of this law against political dissent. Friends, what happened with the Supreme Court in May 11/22 and later by the order of October 22 is very interesting, and I'll just remind you very quickly of a few quotations from that time. Both the petitioners and the Attorney General have pointed out instances when this law has been misused. This is what the court said in May 22. In the light of this, I quote now, "It will be appropriate not to continue the usage of the aforesaid provision of law by the governments," unquote. We hope and expect that the state and central governments will refrain from registering any FIR, continuing any investigation or taking any coercive measures by invoking 124A while the aforesaid provision of law is under abeyance and consideration. And so on.
So the clear object was that you will have either a repeal or at least significantly softening features. Why were these comments made? Why were these comments made, friends? Need I remind you, this judgment, this order or this set of proceedings in 2022 happened after, in a short span of 8 years, since 2014, the statistics were alarming. Statistics showed a 28%, almost 30% rise in sedition cases between 2014 and 20. 559 cases in this period as compared to 30% and less before that. Sedition cases were filed against those in the pandemic who raised issues of lack of ventilators, oxygen, etc., etc. 12 such cases were filed under 124A. 21 sedition cases were filed against journalists. Many have been arrested under this provision, including the context of COVID-19, farm laws, Hathras gang rape, citizenship. So criticism of the government is this tool to be used selectively and partisanly. 27 sedition cases were filed against those who protested on the Citizenship Act and the National Register for Citizens. 8 were filed against those who were protesting in the context of farm laws. In Uttar Pradesh, 60% of bail applications at trial courts were rejected. And they all involved cases of protest, religious hate, or insults to national symbols. I need not remind you how a minority community baker, can we please? Baker, a profile, had to spend 3 months in jail before bail was granted on sedition issues. 3 sedition cases were filed in 3 BJP-ruled states in January 2021. They included, and I repeat, persons like Shashi Tharoor, Rajdeep Sardesai, Mrinal Pandey, Zafar Aga, Caravan's magazine editor, etc., etc. Vinod Dua faced it. Elgar Parishad faced it. We cannot forget this because institutional memory is short, so it is vital to remind you. And therefore, friends, I will condemn this. I will completely reject this on behalf of the Congress and ask the following questions as I end. 1. Why does this government not have the courage to repeal the sedition law? Despite the strong observations of the Supreme Court rendering it inoperative for the last over 1 year, with the clear understanding that it will be significantly softened to vanishing point or repealed. Question number 2. Why have these cases of sedition exploded during BJP regimes? The figures are there for you from 2014. Third, is this an initial step to create a fear psychosis before the upcoming elections, the general elections next year, and further elections at the state level? 4, why is this used partisanly, selectively, principally against opposition persons or those opposed in terms of having a different thinking and philosophy than the government view? How many BJP sympathizers have been booked under this law? 5th, is this nothing more than a circuitous route by the government, a circuitous circumvention to avoid the Supreme Court observations and to actually do the reverse, to make this law more draconian? And lastly, why does this government not change its control freak style of functioning? A control freak sarkar, why does it not change its colonial mindset, its hypocritical swearing against colonialism and doing exactly what is that mansikta?
In a nutshell, the BJP now plans to become more draconian, drastic and deadly by misuse of a colonial era law. दोस्तों, संक्षेप में हिंदी में मैं आपके समक्ष निवेदन करना चाहूंगा कि आयोग की सिफारिशों से देश में बढ़ेगा बवाल। कानून आयोग की सिफारिशों से जो इस सरकार ने निश्चित रूप से प्रस्तावित की है, नहीं तो ये सिफारिश आती नहीं। आयोग की सिफारिशों से देश में बदलेगा बवाल, बढ़ेगा बवाल। अब कैसे कोई उठाएगा आवाज, कैसे कोई पूछेगा सवाल। आज ये राजद्रोह के कानून में उसके जरिए तनाव बढ़ाने की तकनीक, विपक्ष के गला घोटने की तकनीक, अपने सामने आम चुनाव देखकर और जारा प्रताड़नाएं करने की तकनीक, ये सब ये सरकार इन सब चीजों में माहिर है। दोस्तों, मैं संक्षेप में आपको जो 6 पहलू हैं मूल रूप से इस प्रस्ताव के, वो बताना चाहता हूं। मूल रूप से इसके बहुत ही घिनौने जो पहलू हैं, उसका नंबर 1 है, ये जो अभी स्थापित राष्ट्रद्रोह का कानून है, उसको और भी ज्यादा भयानक, खतरनाक और ज्यादा तकलीफ वाला, दर्दनाक बनाना चाहते हैं। और उसका एक तकनीक है कि जो नीचे दर्जे का दंड है उसको 3 साल से 7 साल करवा दिया गया है प्रस्ताव के रूप में। दूसरा, ये ऐसे प्रस्ताव आया है जैसे अनभिज्ञ है पूरा देश। सरकार उच्चतम न्यायालय की 1 वर्ष पुरानी कार्रवाई से, उसमें विस्तृत कई ऑर्डर हुए हैं जिनको बारे में मैं कुछ कोट करूंगा आपको वापस अभी। ये ऐसे प्रस्ताव आया है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं, और ऐसी प्रक्रियाओं के बाद जिसपे सीधा उच्चतम न्यायालय ने ये प्रकट किया अपना विश्वास और अपनी मंशा कि इस कानून को अब बंद किया जाए या इतना छोटा किया जाए, इतना कम प्रभावशाली किया जाए कि इसके कोई दांत न बचे। तीसरा, एक मजाकिया चीज की गई है जो 60 साल से न्यायपालिका का कानून था। केदारनाथ 1962 का निर्णय 60 साल पुराना है। जो कानून बनाया गया था न्यायपालिका द्वारा, उसको प्रस्तावित किया है कि उसको अब विधायिका द्वारा बना दिया जाए। बस ये संशोधन, ये इंप्रूवमेंट, ये सुधार बताया गया है 60 साल बाद। इसलिए मैंने कहा कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, बल्कि चूहा नहीं, मैं कहूंगा एक भयानक राक्षस निकला है। चौथा, कोई भी ऐसा सेफगार्ड, सुरक्षा चक्र नहीं दिया गया है कानून में जिससे कि उसके दुरुपयोग को कम हो, रोका जाए। और उसके दुरुपयोग के आंकड़े मैं अभी आपको देने वाला हूं 2014 के बाद। पांचवा, बड़ा स्पष्ट रूप से कॉलोनियल एक मानसिकता का संदेश दिया गया है कि हम उसी मानसिकता से शासक और प्रजा के बीच में दूरी रखेंगे और इस कानून द्वारा गणतंत्र की नींव को पर आक्रमण करेंगे, उखाड़ेंगे। क्योंकि गणतंत्र की नींव है स्वतंत्र सोच, निष्पक्ष सोच, बोलचाल इत्यादि। और अंतिम बात ये बड़ा स्पष्ट है कि एक संदेश दिया गया है विशेष रूप से चुनाव के पहले कि हम इसका वैसे ही एक तरफा, एक पक्षपात से ओतप्रोत दुरुपयोग करेंगे, विशेष रूप से विपक्ष के नेताओं के विरुद्ध। उच्चतम न्यायालय के ये आपने वाक्य याद दिला दूं आपको, क्योंकि संस्थापिक स्मृति को वापस जगाना आवश्यक है। It will be appropriate not to continue the usage of the aforesaid provision of law by the governments. बल्कि इसको सुनकर असंवैधानिक करार करने की प्रक्रिया उस स्टेज तक पहुंच गई थी। जब असंवैधानिक करार करने की प्रक्रिया की स्टेज पहुंची थी तो कहा गया सरकार द्वारा कि अभी इसको नहीं सुनिए, हम इसको पुनर्विचार करते हैं। पुनर्विचार का आपने परिणाम देखा है। आगे कहा उच्चतम न्यायालय ने, वी होप एंड एक्सपेक्ट दैट द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स विल रिस्ट्रेन फ्रॉम रजिस्टरिंग एनी एफआईआर
continuing any investigation or taking any coercive measures by invoking 124A while the aforesaid provision is under consideration. तो उन्होंने इसको स्थगित कर दिया, रोक दिया, इसका कानूनी मरण कर दिया था पिछले 1-1.5 साल से। उसके बावजूद ये किया गया है। क्यों? क्योंकि यही पहचान और चेहरा रहा है सरकार का 2014 के बाद। आंकड़े आपके समक्ष हैं। 2014 से 20 में लगभग 28 से 30% बढ़ोतरी हुई है इन केसेस में। लगभग 550 से ज्यादा केसेस फाइल हुए हैं इस अल्प समय में, 8 साल में। 12 फाइल किए गए हैं पैंडेमिक के दौरान उन लोगों के बारे में जिन्होंने विरोध किया ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर्स इत्यादि के मुद्दों पे। 21 केस गए हैं पत्रकारों के विरुद्ध। उसमें कोविड के मुद्दे शामिल हैं, हाथरस गैंगरेप के हैं, नागरिकता के हैं इत्यादि। 27 केसेस हैं सिटीजनशिप एक्ट और रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर के विषय में। हम जानते हैं कि करीब करीब उत्तर प्रदेश में 60% बेल याचिकाएं इस विषय में निरस्त होती हैं। 60%। कई दर्दनाक भयानक उदाहरण आए हैं। जनवरी 2021 में 3 सेडिशन केसेस फाइल किए गए कई लोगों के विरुद्ध में, सिर्फ बीजेपी शासित प्रदेशों में। शशि थरूर के विरुद्ध, राजदीप सरदेसाई के विरुद्ध, मृणाल पांडे के विरुद्ध, कौमी आवाज के जफर आगा के विरुद्ध, परेश नाथ कारवा मैगजीन के विरुद्ध, अनंत नाथ, विनोद जोज, बाद में विनोद दुआ के विरुद्ध, एल्गार परिषद, सिर्फ विरोध, गणतांत्रिक विरोध करने के लिए, सिर्फ अपनी आवाज उठा के किसी चीज की निंदा करने के लिए। इस प्रकार के उदाहरण और बहुत हैं। लेकिन मूल जो प्रश्न उठता है, जिससे मैं अपनी बात अंत करूंगा, मूल प्रश्न 4-5 हैं। नंबर 1 कि क्या इस सरकार में हिम्मत, दम, धैर्य नहीं है कि वो इस कानून को हटा दे। इसके लिए अभियान हुआ है देश में। उच्चतम न्यायालय ने करीब करीब अपना मत रखा है। गणतंत्र में इसको हटाने की बात क्यों नहीं करती है वो? उल्टा उससे कहीं ज्यादा भयानक बनाने का प्रस्ताव आपके समक्ष आया है। दूसरा, 2014 के बाद बीजेपी के सरकारों में ये क्यों तिगुना, दुगुना, इतना ज्यादा इसका दुरुपयोग क्यों बढ़ा है? आंकड़े इतने क्यों बढ़े हैं? तीसरा, क्या ये आगामी राष्ट्रीय चुनाव के संबंध में एक और टूल निकाला गया है? दुष्प्रभाव का, भय का, प्रताड़ना का, कंट्रोल फ्रीक का। चौथा, ये सिर्फ पक्षपाती रूप से विपक्ष के सेगमेंट्स के विरुद्ध क्यों इस्तेमाल और दुरुपयोग होता है? पांचवा, क्या ये कानून आयोग द्वारा एक तरीका निकाला गया है, एक घुमा फिरा के तरीका, एक ऊंचा नीचा तरीका, जिससे कि आप उच्चतम न्यायालय को एक प्रकार से अवहेलना करें और इस रूप से विपरीत करें, जो देश की मंशा है उसके विपरीत चलें। और अंत में, कब ये कंट्रोल फ्रीक सरकार, ये नियंत्रण की फ्रीक सरकार, ये नियंत्रण से हर व्यक्ति, हर चीज, हर पत्ते को नियंत्रित करने वाली जो भावना है, वो सरकार कब ये कॉलोनियल मानसिकता को हटाएगी? ये हमारे प्रश्न हैं, ये हमारी निंदा है, ये हमारी भर्त्सना है आपके जरिए, क्योंकि ये एक काला दिवस है काले कानून के विषय में जो प्रस्तावित हुआ है। धन्यवाद। इस पे प्रश्न लें पहले। ये सिर्फ तो सामने आई है, लेकिन शुरू होने वाला है भी इस कानून को लाया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी किस तरीके से विरोध करेगी? मेरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप दोहरा दीजिए, वही करेंगे हम। संसद में हमारा बिल्कुल यही मंतव्य होगा जो मैंने यहाँ से कहा है। संसद में हमारा स्टैंड और कांग्रेस पार्टी का जो अभी स्टैंड है, मैंने आपको विस्तृत रूप से उसका एक एक एलिमेंट बताया है। मैंने क्यों, कब, कैसे, सब कुछ बताया आपको। विपक्षी पार्टियों को भी एक साथ लेकर आने की कोशिश करेंगे आप लोग?
निश्चित रूप से आने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि देश में एक बहुत ही व्यापक हिस्सा है जो शब्द हमारे बेशक आज हो, लेकिन हमारे उद्देश्य, हमारे जो हमने कहा है उसके सब्सटेंस से पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि ये काला कानून है, काला दिवस का कानून है। Before the top court that the sedition law will be re-examined. So isn't not a different step altogether when a separate wing of the government is saying? Alice in Wonderland said, "Words mean what I say they mean." You remember Alice in Wonderland? Words will mean what I say they mean. So re-examined in this dictionary means we will re-examine and make it more draconian, more stringent. That's the dictionary of the BJP. The BJP lexicon has a special meaning to the word re-examined. Now they are not wrong. Of course it is re-examination. If I make a re-examination and convert a 7 years into death penalty, it's a re-examination. So they are right. You judge for yourself if this was a re-examination intended by the Supreme Court. You see, everybody knows that ultimately these are unmeritorious cases. They are hollow cases. They are cases actuated by political and other malafides, ulterior motives to harass and detain people. So even the prosecution knows that they will be ultimately released. But the real point is that the process is the punishment. Everybody knows that in our system, that process can take 3 to 6 months minimum if you are lucky. If you are slightly unlucky, it becomes 1 year. If you are a little more unlucky, it's 2 years. That's enough. 3 days is enough to ruin a person. 3 months is certainly enough to ruin a person. That is the only object. आप समझ लीजिए कि मानहानि में सबसे ज्यादा दंड कितना होता है, आपको पता होना चाहिए, 2 वर्ष। यहां अभी बढ़ा के आपके नाक के नीचे 3 से 7 कर रहे हैं, और सबसे ऊंचा इसमें जीवन काल है। तो आप समझ लीजिए कि मानहानि तो इसके सामने चूहा लगेगा। और अगर जिस प्रकार से आपका मंतव्य है दुरुपयोग करने का, उसमें तो आप इस चूहे को एक भयानक राक्षस बना सकते हैं। मैंने जितनी भी भाषा अभी इस्तेमाल की है वो आम और सभ्य भाषा है, हिंदी है, इंग्लिश है। उससे ज्यादा सरल करने का काम आपका है, और हमारे जरिए आप और आपके जरिए जनता तक पहुंचना है। ये संदेश का तरीका यही है। इसके अलावा जो हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो बारंबार इस बात को कहेंगे, और आप मान के चलिए कि आप भी सक्षम हैं सरलता के लिए और हम भी सक्षम हैं सरलता के लिए। जी, yeah, we just come. Anything else on sedition? In the English? Okay, let's do something else. It doesn't require any comments. It's a process going on, a proceeding going on. It's an interim application in a pending suit. The main matter is not being decided. People asking the question are asking as if it's the last word. It has been sent back for decision. We have to await the decision. The main matter on merits is yet to be started even. It's not even started. So I don't think there's any occasion for the Congress to comment on this. सर, मेरा सवाल है कि क्या रूस और यूक्रेन पर जो सरकार की नीति है, किस पे? रूस और यूक्रेन को लेकर सरकार की नीति है, क्या कांग्रेस सरकार के साथ है या क्या? ये तो एक बड़ा सा प्रश्न है ना। इस पे साथ इंडिविजुअल नीति के सब कंपोनेंट पर निर्भर करता है। विदेश मामलों में जितना समर्थन कांग्रेस ने राष्ट्रीय नीति का किया है, उतना बीजेपी ने विपक्ष की हैसियत से कभी नहीं किया है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपके समक्ष। लेकिन उस नीति के किस कंपोनेंट के बारे में आप बोल रहे हैं, उस पर निर्भर करेगा हमारा रिएक्शन। ये नहीं होता कि एक वर्ड नीति बोल के जो भी कुछ कर ले उस नीति के नाम पे,
उसका समर्थन किया जाएगा। जहां राष्ट्रीय हित है, जहां नीति का पुट और नींव राष्ट्रीय हित पे आधारित है, हम सरकार के 2 कदम आगे हैं। राहुल गांधी ने तारीफ की है मोदी सरकार की रूस और यूक्रेन युद्ध पर दिए गए स्टैंड को लेकर। मैंने 1 सेकंड पहले क्या कहा? जहां पर राष्ट्रीय हित का मामला है, मेरिट्स पे, तथ्यों पे, एक उदाहरण लें आप, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं सिर्फ, तेल का मामला लीजिए। अब तेल के मामले में हम भी झगड़ सकते थे रूस से, हम रूस के हर नीति से सहमत नहीं है, लेकिन आपके मुंह में और इनके चूल्हे में और मेरे घर में तेल आने के लिए एक राष्ट्रीय हित का मुद्दा होता है। तो इसलिए बीजेपी कुछ भी कहे, कांग्रेस ने हमेशा से कई दशकों से विपक्ष में हो या सत्तारूढ़ हो, राष्ट्रीय हित को देखा है विदेश नीति में। उसका उदाहरण आप देख रहे हैं। About that is okay. That's been done already. I mean, we are repeating. It's all right. This has been. It is responded earlier. You are repeating it again, the same question to get a different answer in some way, and then exploit it. What's the point of it? Okay. हाँ जी. कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से इसका निर्णय, इसका फैसला, इसका मंतव्य बताएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी पे ये निर्णय छोड़िए। निर्णय के पूर्व एक निर्णय नहीं हो सकता, वो निर्णय होगा तब बताया जाएगा। आज जब उस पर बातचीत चल रही है, विचार विमर्श चल रहा है, तो उसके बारे में टिप्पणी करना गलत होगा। हर पार्टी सोच समझ के अपने नीति, अपने रीति रिवाज को देखकर निर्णय लेती है। वो प्रक्रिया अभी अंत नहीं हुई है, वो शुरू हुई है। थोड़ा इंतजार करें, पिक्चर अभी बाकी है। Madam, you are all experienced journalists. You forget lawyers, you forget law. You tell me a single instance of a 1-year offense where the person has a political affiliation of the opposition. 6-month offense. They take 6 seconds to arrest him. You know it better than I do. ED is ready to arrest you if you sneeze. It is doing it every day. How many times have you seen a group of persons, including ladies, for the last several weeks, I don't know how many weeks, giving details, gory details, thereafter FIR, thereafter inquiry, and for over 2 months, there is no arrest? I will only say that I wish this no arrest rule would apply across the country to actual real innocents, not to persons against whom such serious allegations are made. There is only one reason for it. The person belongs to the powers that be, and the person is seen as exercising influence beyond his parliamentary constituency, and therefore covering maybe 14 or 15 assembly constituencies. That is the true chal, charitra and chehra of the BJP. Sermonizing, giving you lectures and rhetoric, and in actual fact, anybody of any political spectrum opposed 1 millimeter to the BJP would have been behind bars after 3 minutes. Why are you asking this question suddenly? What was true yesterday is true today. Let the judgment come, then we will see.
No, there is no question of reacting like this. Let judgments come. They are pending matters. They are reserved matters. Let the judge rule first before I rule and you rule. Okay.